Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today I'm going to discuss nuclei means nuclear physics, some previous year questions with you. Yesterday we had discussed some important concepts, and today we are going to do some questions on it. Okay, so let's start. Starting with the very first question. Consider a nuclear fission reaction. Neon 20 goes to 2 helium 4 plus carbon 12. Given that the binding energy per nucleon of neon 20, helium 4 and carbon 12 are respectively 8.03 million electron volt, 7.02 milli electron volt and 7.86 MeV. Then identify the correct signals. उसमें से correct signal कौन कौन से हैं मेरे को बताना है, ठीक है? मेरे को 4 सिग्नल दिए हैं, मेरे को बताना है एनर्जी ऑफ 9.72 MeV हैज टू बी सप्लाइड. मेरे को इतनी सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके ये न्यूक्लियर फिजन होगा, क्या होगा? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कल एक बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अपने को उनको हाउ मच एनर्जी आई हैव टू गिव टू दैट एटम और मॉलिक्यूल टू ब्रेक, मतलब उसको उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम हटाने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी. दैट इज माई बाइंडिंग एनर्जी. तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा. चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल मीन्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड बाइंडिंग एनर्जी फाइनल मीन्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. कूल. तो यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, मेरे को पता है इनिशियली मेरे पास सिर्फ नियॉन 20 है. नियॉन 20 मींस देयर आर 20 न्यूक्लियॉन्स इन इट. सो आई हैव बीन गिवन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नियॉन 20 व्हिच इज 8.03. सो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 20 into 8.03 माइनस फाइनल बाइंडिंग एनर्जी. कैसे निकालेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ पे टोटल न्यूक्लियॉन्स 4 है एंड देयर आर 2 एटम्स, सो इट विल बी 8. So 8 into 7.07 because binding energy per nucleon of helium is 7.07 plus 12 into binding energy per nucleon of carbon, which is 7.86. So this is the change in binding energy, which is 9.72 million electron volt. इसका मतलब मेरे को 9.72 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूँ तब मिल रही है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. मैंने आपको कल बताया था कि अगर एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब जो कंपाउंड्स बन रहे हैं दे आर स्टेबल. तो स्टेबल कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए मेरे को उतनी बाइंडिंग एनर्जी उसको वापस देनी पड़ेगी. सो उसी उसी से मैं कह सकता हूँ कि सिंस 9.72 MeV एनर्जी इज द नेट क्यू वैल्यू, सो मैं क्यू वैल्यू बोलता हूँ, प्लीज इसको ध्यान रखना. तो अगर मेरी क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है विच मीन्स कि मेरी बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी फाइनल, इम्प्लाइज जो मेरे प्रोडक्ट्स है वो स्टेबल है. प्रोडक्ट स्टेबल है तो प्रोडक्ट्स को ब्रेक करने के लिए मेरे को इतनी एनर्जी वापस सप्लाई करनी पड़ेगी. सो माय राइट आंसर वुड बी ए पार्ट विच इज एनर्जी ऑफ 9.72 MeV हैज टू बी सप्लाइड. सो अगर मैं इसमें जब 9.72 MeV सप्लाई करूंगा तभी जो मेरा नियॉन 20 है वो ब्रेक हो जाएगा 2 हीलियम और कार्बन 12. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. An unstable heavy nucleus at rest breaks into two nuclei, मतलब ये nuclear fission reaction है. Whenever unstable heavy nucleus breaks into smaller nuclei, we say that it is a nuclear fission reaction which moves away with velocities in the ratio of 8:27. मतलब एक की velocity अगर 8 है तो दूसरे की velocity 27. The ratio of the radii of the nuclei is, मेरे को जो radii है उसकी जो मेरे पास दो nuclei है उसकी radii का रेशियो बताना है. तो मैंने आपको कल बताया था कि वैसे तो हम लोग इसमें वैसे निकाल सकते हैं कि जो मेरा न्यूक्लियर होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, और स्फेरिकल जो शेप होता है उस स्फेरिकल की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 πr क्यूब. 1 सेकेंड. स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 πr क्यूब. इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 πr क्यूब. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालनी रिडाई. रिडाई क्या होता है? रिडाई होता है, रिडाई मतलब देखो ऐसे देखो, पहले मेरे को पता है कि जो मेरा रिडाई होता है आर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3. ये मैंने कल पढ़ा था यहाँ. ठीक है. बट यहाँ पे मुझे वो चीज यूज में नहीं आ रही है. यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है, मुझसे रेडियस का रेशियो पूछा है. तो पहले सबसे पहले तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा जैसे यहाँ पे लगाया है. क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस है, वही अपने आप दो न्यूक्लियर में टूट रहा है, लेकिन मैंने कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है बेसिकली. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होता देन आई वुड हैव नॉट कंजर्व मोमेंटम, बट इन दिस केस सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स सो आई कैन कंजर्व मोमेंटम. So here initial momentum was 0.
Final was for one it would be m1 v1 and for second would be minus m2 v2. Why minus? Because अगर ये भी प्लस हो जाएगा तो फिर ये कभी जीरो हो नहीं सकता. So m1 by m2 मैं यहाँ से निकाल लूंगा, it is 27/8. ठीक है. बेसिकली मेरे को v1 by v2 दिया हुआ था तो m1 by m2 मैंने वहां से निकाल लिया, it is 27/8. अब मैंने m1 by m2 निकाल लिया, मेरे को पता है m होता है मास इंटू m होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वुड बी रो इंटू 4/3 pi r cube is equal to 27/8. मेरे को r1 cube by r1 by r2 जो चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज आई नो दैट रो इज सेम, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है और वो दो न्यूक्लियस में टूटता है. मैं डेंसिटी को अगर नहीं दिया हुआ है तो मैं सेम एज्यूम करके चल रहा हूँ. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग r1 cube upon r2 cube to be equal to 27/8. ठीक. अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए r1 by r2. बस सिंपली मैं इसका 1/3 कर दूंगा and I will get my final answer as 3/2. ठीक. Simple question था. You have to just use conservation of momentum principle. From there you will get the ratio of masses, and from mass ratio you can easily get the ratio of your radii. ठीक है. So it was all about question number 2. Moving on to next question. A nucleus disintegrates into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1. Again उसी टाइप का क्वेश्चन है. मेरे को बोला गया कि न्यूक्लियस एक कोई न्यूक्लियस है that is disintegrating into two nuclear parts. It may disintegrate into many also. It is not a rule कि अगर कोई न्यूक्लियर फिजन हो रहा है तो हमेशा दो ही बनेंगे, ज्यादा भी बन सकते हैं. But relating to this question, a nucleus disintegrates into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1. So v2 by v1 is 2:1. v1 by v2, एक पार्टिकल की वेलोसिटी अपॉन सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 2:1. ठीक. सो 2:1 है मेरी वेलोसिटीज. सो v1 by v2 2:1 दिया हुआ है. वापस मेरे को v1 by v2 दिया हुआ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा. मोमेंटम कंजर्वेशन वापस वही होगा, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा. सो 0 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2. m1 v1 माइनस m2 v2, ये हो जाएगा मेरा फाइनल मोमेंटम. ठीक है. तो यहाँ से हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. एंड फ्रॉम देयर सिंस मेरे को v1 by v2 का रेशियो पता है तो m1 by m2 का रेशियो पता है. सो m का रेशियो अगर मेरे को पता है, सो फ्रॉम देयर आई कैन इजीली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ माय रेडाई यूजिंग द सेम फॉर्मूला. मेरे को यहाँ से r1 अपॉन r2 क्यूब का रेशियो मिल जाएगा. फ्रॉम देयर आई वुड गेट माय फाइनल आंसर एज 1/2 पावर 1/3, क्योंकि वहां पर था 27/8, उसका मैंने 1/3 किया, सो आई गॉट 3/2. बट यहाँ पे तो 1/2 है, तो 1/2 की पावर 1/3 इज 1/3 ओनली. So my final answer would be D part. Cool. इसमें बस एक चीज यहाँ पे जो मिस्टेक हो सकती है, that can be like m1 v1 is equal to m2 तो आपको मिलेगा. So your ratio of masses would be invertible to your masses of to your ratio of velocity. मतलब sorry m2 v2, basically मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि v1 is inversely proportional to its mass. Basically v1 by v2 is not equal to m1 by m2, it is equal to m2 by m1. बस ये ध्यान रखना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक. Moving on to next question. Two neutrons undergo nuclear fusion to form a helium nucleus. जो मैंने आपको कल बताया था, when two or more nucleus combine together to form a large nucleus is known as nuclear fusion reaction. So here two neutrons are undergoing nuclear fusion reaction to form a heavy nucleus. So these are the two neutrons, one H2 and one H2, two neutrons combining to form a one helium nucleus. Now energy released in this process is giving binding energy per nucleon for deuteron is 1.1 MeV and for helium it is 7 MeV. Cool. तो बेसिकली मेरे को बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है पर न्यूक्लियन. फॉर ड्यूट्रॉन इट इज 1.1 MeV एंड फॉर हीलियम इट इज 7 MeV. ठीक है. तो मेरे को एनर्जी रिलीज बताना है, तो ये उसी टाइप का सवाल है. हमने सबसे पहले क्या था, वी हैव टू कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ओनली. So initial binding energy would be since मेरे को दिया हुआ है कि two neutrons are combining basically. So initial binding energy would be binding energy of neutrons minus binding energy of final क्या बन रहा है helium nucleus minus binding energy of helium nucleus. And since they are telling me that there are two neutrons are combining, so we know that the neutron mass is nothing but 1h2.
अगर ये नहीं पता तो there are three isotopes of hydrogen. This is protium, which is 1H1. Then this is deuterium, which is 1H2. And then this is tritium, which is 1H3. ठीक है. So basically एनर्जी जो मेरी रिलीज होगी वो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ माय रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ माय प्रोडक्ट्स. तो मेरे को कितनी दी हुई है फॉर पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन इज 1.1 MeV. सो 1.1 into 4 minus 4 into 7, which is for helium. And why I'm doing 4? Because we know that deuterium has two nucleons, and since there are two neutrons, so there would be four nucleons. That's why I'm multiplying by 4. Similarly for helium also has four nucleons, so we are multiplying it by 4. And since we know that this is coming out to be positive, so this much energy would be released in when my neutrons will combine to form a helium nucleus. So answer would be 23.6 milli electron volt. That's my final answer. So moving on to next question. If the binding energy per nucleon in lithium, which is this isotope, is given to me 3Li7, and helium 2He4, nuclei are 5.60 MeV and 7.60 MeV. Again, binding energy per nucleon is given to me respectively. Then in the reaction, this the energy of proton will be what? मुझसे energy of proton पूछा है, ठीक है? So how to do it? Again, same thing. I have to apply conservation of energy principle. Nothing else I can do. So let's say binding energy of proton is something which I don't know. So that thing plus binding energy of lithium per nucleon is given to me as 5.60. So since there are 7 nucleons in lithium, so my final energy would be 7 into 5.60, which is 39.2 MeV, million electron volt. And for helium, since there are two times 2He4, so there would be 4 into 2, 8 nucleons. So it would be 4 into 7.06 for one helium. And since there are two, so I will multiply 28.24 by 2. So that's what it is done here. 2 into 28.24 minus 39.2, which is nothing but 7 into 5.60. From there, I got my final answer 17.28 MeV. Since I know that they are not talking about any energy released or any mass conservation energy, any mass energy equal installation, they're not talking about something like that. So what can I do in this case? I can just conserve the energy for reactant side and for product side. For reactant side, there is proton and lithium. So it would be lithium energy would be 39.2 plus proton energy, which is 17.2, which is equal to the product energy, which is 2 into 28.24. So my final answer would be 17.28 MeV. Okay. So what I did here is I applied conservation of energy principle. Okay. So I applied conservation of energy principle, means energy of reactant side is equal to energy of product side, and from there I got my final answer. Now, next question. Nuclear transformation is denoted by X and alpha 3Li7. Which of the following is the nucleus of the element X? So जो इस टाइप का मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा X एटम है उसमें लेट्स से Z प्रोटॉन्स है या Z एटॉमिक नंबर है एंड A इज द मास नंबर. इसमें जो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ जो फर्स्ट पार्टिकल होता है, ये मैंने इस पर बम्बार्ड किया है बेसिकली. मतलब ये आता है हमेशा रिएक्टिंग साइड पे, जो भी मेरा फर्स्ट पार्टिकल होगा ब्रैकेट के अंदर. सो इट इज N, सो इट वुड बी न्यूट्रॉन, सो इट वुड बी 0 N1 because neutron has zero charge and it has one mass number because of one neutron. And the second thing inside the bracket represents the release product. Since it is alpha, so it is an alpha particle. It is an alpha particle और मुझे पता है alpha particle क्या होता है.
Alpha particle is nothing but the helium nucleus. Alpha particle is my helium nucleus only. So helium nucleus क्या होता है? 2He4. So one helium nucleus, and the final thing, this is released. So my final answer would be 3Li7 plus 2He4. This is my reaction. So whenever this type of representation is given to you, so you have to think it like this thing, like this. So let me erase that thing. So now what is asked to us? Which of the following is the nucleus of element X? इसमें से element X का nucleus कौन सा है? तो basically मेरे को element X बताना है. तो element X बताने के लिए मैं क्या करूँ? I calculate A and Z, and from A and Z I can tell the nucleus. So since they are bombarding on neutrons, so let's conserve mass number and mass number and atomic number, because mass number atomic number तो कहीं जाएगा नहीं. जो reactant में है वो product में convert हो जाएगा. So initially it was A plus 1, that is equal to 7 plus 4. So from here, I'm getting my value of A to be equal to 10. Similarly with Z, Z plus 0 is equal to 3 plus 2. So from here, I'm getting the value of Z to be 5. And since I know that there are 5 protons, so hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. So this is my nothing but boron atom. So my final answer would be 5 times boron 10. This is the nucleus which I'm talking about. Cool. तो बस आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कंजर्व करना है at both sides, product and reactant side. From there you will get your final answer as boron atom, which is 5b10. ठीक है. Moving on to question number 10. Using a nuclear counter. Okay, now it's a question about radioactivity. Using a nuclear counter, the count rate of emitted particles from a radioactive source is measured at t equal to 0. It was 1600 counts per second. How much? 1600 counts per second. मतलब इनिशियली जो मेरा न्यूक्लियाई का रेट था वो था, न्यूक्लियाई थी, वो थे, मतलब न्यूक्लियाई के जो पार्टिकल्स है जो डिके नहीं हुए अभी तक, that was 1600 counts per second. So it is representing my n naught. N naught is given to me as 1600. And then at t equal to 8 seconds, it was at 100 counts per second. So final n is also given to me, which is 100. And time lapse is also given to me as t equal to 8. The count rate observed as counts per second at t equal to 6 seconds is close to what? So basically मेरे को एक डेटा दिया हुआ है. How you will interpret this question is like you have been given one data and you have been asked about something about some other thing. So basically आप पहले तो यहाँ पे वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाओगे जो रेडियोएक्टिविटी की होती है, which is n is equal to n naught e power minus lambda t. एंड फ्रॉम देयर जो मेरे को दिया हुआ है सबसे पहले मैं वहां से लैम्डा निकालूंगा. सो 600 वाज इनिशियल एंड फाइनल इज 100. सो बेसिकली इट वुड बी 100 अपॉन 600 इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा 8, या फिर ई पावर माइनस 8 लैम्डा. ठीक. तो यहाँ से मैं लैम्डा निकाल लूंगा. एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द लैम्डा वैल्यू फ्रॉम हियर, let me calculate this. 1 by 6, so it would be ln of 1 by 6, and minus would get cancelled. So basically it would be ln 6. So 8 lambda is ln 6. So lambda is ln 6 by 8. Ln, oh sorry, it is 1600. So it would be ln 16,
ln 16 is nothing but 2 power 4. So 2 power 4, I can easily write it as 4 log 2. So ln 16, let me write it for once. Ln 16 divided by 8. So it would be 4 ln 2, and 4 ln 2 by 8 is ln 2 by 2. So lambda is given to me as ln 2 by 2. This is my lambda. So using my information, I calculated my value for lambda, which is the disintegration constant. Cool. And now the thing which is asked to me is the count rate observed as counts per second at t equal to 6 seconds. So again, I will apply the same equation. N is equal to n naught e power minus disintegration constant into time period. So now n is asked to me. N is equal to initial n naught will remain same as 1600 into e power minus lambda is ln 2 by 2, ln 2 by 2 into time period is 6 seconds. So it would be 3 ln 2. So it would be 1600 into e power minus 3 ln 2 would be ln of 2 power 3, which is 8. So my final answer would be e and ln will cancel, minus will go on to the power. So we will get our final answer as 1600 into 1 by 8. So number of nuclei counts per second, it is per second only. After 6 seconds would be 200. So it is exponential decay. ये तो आपने देख ही लिया होगा. Why? Because at t equal to 6 seconds it is 200, but at t equal to 8 seconds it is 100 only. So from t equal to 0 to t equal to 6, it gone from 1600 to 200. How fast? And then it goes on slowly because in 2 seconds it only decreased 100 count per second. So my graph is something like this. This question is giving me an idea about it also. Initially the graph falls linearly, not linearly actually, straight, and then it like becomes a constant line at t equal to infinity. So my final answer would be n equal to 200. That is what it is giving here. Cool. So I hope you got it. It was a simple question. Just you have to apply simple formulas of your radioactivity, and from that you can easily solve this question. Okay. Moving on to the next question. A heavy nucleus Q of half-life 20 minutes undergoes alpha decay. Which decay? Alpha decay. With a probability of 60% and a beta decay with a probability of 40%. So basically वहाँ पे alpha decay भी हो रहा है, beta decay भी हो रहा है, and the probability is given to me, means alpha decay होने की probability is 60% and for beta decay it is 40%. And half-life is also given to me. Why half-life is given to me? I can assume it that half-life is given to me to calculate my lambda, which is disintegration constant, because I told you yesterday that my half-life is related to disintegration constant lambda by ln 2. So T half is equal to ln 2 by lambda. Cool. So T half is given to me as 20 minutes, and the number of alpha decays in the first 1 hour. So 1 hour means 60 minutes. So we'll be talking about 60 minutes. So मेरे को पता है कि एक हाफ लाइफ में, सॉरी, एक हाफ लाइफ में 20 minutes है, and it is 60 minutes. So basically 3 half lives would be passed. Means मेरा जो एटम है, इनिशियली अगर मैं उसको 1000 मान के चलूँ कि अच्छा इनिशियली मुझे दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली 1000, तो एक हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? 1000 का आधा हो जाएगा. हाफ लाइफ क्या होता है? Half-life is basically the time interval in which your nuclei reduces to half. So initially it was 1000, so 1000 से वो 500 हो जाएगा एक हाफ लाइफ में. सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा? सेकेंड हाफ लाइफ में वो 500 का आधा होगा. 1000 का 1/4 नहीं हो जाएगा, 500 का आधा हो जाएगा. सो बेसिकली वहां से भी सेम आंसर आएगा, लेकिन जो हाफ लाइफ का मतलब है वो ये है कि जो उस टाइम पे न्यूक्लियाई है उसका आधा होना. सो बेसिकली 500 का हाफ हो जाएगा, 250, एंड सिंस देयर आर 3 हाफ लाइव्स,
so it would be again a half of 250 also, so it would be 125. ठीक है, सो बेसिकली मेरे 3 न्यूक्लियाई बचेंगे, तो कितने चले गए? 875 चले गए। ठीक है, तो मुझसे पूछा नंबर ऑफ अल्फा डीकेस ऑफ क्यू इन फर्स्ट वन, तो टोटल डीके हुआ 875 न्यूक्लियाई का। अब इसमें से मेरे को निकालना है कि कितना परसेंट अल्फा डीके है और कितना परसेंट बीटा डीके है। तो अल्फा डीके मुझे दिया हुआ 60%, सो 875 का जो 60% होगा दैट वुड बी फ्रॉम अल्फा डीके, एंड जो 40% होगा दैट वुड बी फ्रॉम बीटा डीके। सो 875 इंटू 60/100 इंटू 60/100, that is 0.6. So 875 into 0.6 is equal to 525. So D is my right answer. Cool. बस इसमें आपको इतना देखना था, आपको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ का मतलब होता है कि मेरे न्यूक्लियर जो उस टाइम पे प्रेजेंट है उसके हाफ हो जाएंगे, मतलब इनिशियली 1000 थे, 1000 के हाफ 500, देन 500 के हाफ 250, एंड देन हाफ ऑफ 250 which is 125. So 1000 minus 125 is 875, which implies मेरे 875 न्यूक्लियर खत्म हो गया इन द सेंस डिसइंटीग्रेट हो गया। सो इस 875 में से मुझको पता है कि अल्फा डीके की प्रोबेबिलिटी 60% है और बीटा डीके की प्रोबेबिलिटी 40% है। सो बेसिकली अल्फा डीके की प्रोबेबिलिटी 60% है, implies 875 into 60/100 is my alpha decay, which is 525. So my answer would be D part. ठीक, अब आगे चलते हैं। The ratio of mass densities of nuclei, calcium and oxygen is close to. ओके, तो हम काम करते हैं। द रेशियो ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज क्लोज टू व्हाट? सो बेसिकली मेरे को मास डेंसिटी बतानी है। मैंने आपको अभी पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि इन केस मेरे को डेंसिटी के बारे में कुछ बोला ना जाए तो फिर मैं उसको सबके लिए सेम मान के चलता हूँ। सो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, द मास डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियर इज द सेम, सो द रेशियो वुड बी 1 ओनली। For the uranium nucleus, how does its mass vary with volume? मास वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है वो मुझे बताना है। तो ये तो हम लोग रेडियस वाले एक्सप्रेशन से बता देंगे। मेरे को पता है कि जो मेरा रेडियस वाला एक्सप्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए पावर 1/3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर माई रेडियस। अभी क्योंकि मेरे को वॉल्यूम के बारे में पूछा है तो वॉल्यूम मेरे को पता है क्या होता है। अभी मैंने बताया था वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। Volume is 4 by 3 pi r cube, which implies volume is directly proportional to radius cube. So I would take the cube of it. So I will get R is equal to R naught cube into mass number. And what they are saying how does its mass vary with volume? Mass volume के साथ कैसे vary करता है? So basically जो मेरी volume है वो R cube के directly proportional है. It implies जो मेरी volume है that is directly proportional to my uh, what we say mass number. My volume is directly proportional to my mass number. ठीक, तो बेसिकली मास नंबर ही मास डिफाइन करता है, सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई v, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ इस चीज को, बस इस चीज को ध्यान रखना कि क्योंकि आपको वॉल्यूम पूछा गया तो आपको क्यूब करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप वहीं पे फंसोगे कि v की पावर क्या होगा। तो आपने जब a का क्यूब किया सो यू गॉट a, सो वहां से आपको जो a मिला वहीं से आपको मिला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एरिया एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, और अगर ये सोच रहे हो कि मास नंबर कैसे मास पे डिपेंड कर रहा है, क्यों मेरे को पता है जो किसी एटम का मास होता है वो उसके न्यूक्लियॉन्स में ही होता है, मतलब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ज्यादा मास होगा, सो मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड सिंस मास नंबर इज कमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Imagine that the reactor converts all given mass into energy. Again, it's a question of nuclear disintegration.
all mass into energy, then and that it operates at a power level of 10 power 9 watts. So it is the power level which is 10 power 9 watts, and the mass of fuel consumed per hour in the reactor would be how much. So basically मेरे को power दी गई है, and they are saying कि for getting this much power, how much fuel I need per hour. ठीक है? So how to do it? I know that जो मेरी energy होती है, that is equal to power into time. So power कितनी है? 10 power 9 watts, and since it is given to me as 1 hour, 1 hour means 3600 seconds. So 10 power 9 into 3600 will be my net energy, which is to be given to the nuclear reactor. अभी एनर्जी कहाँ से आती है? ये मैंने बताया आपको, रेडियो एक्टिविटी में जितने भी रेडियो एक्टिविटी में जो भी अपनी एनर्जी आती है, दैट कम्स फ्रॉम द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और वो मास कहाँ से आता है? दैट मास इज कमिंग फ्रॉम द मास डिफेक्ट रिलेशन, where mass defect is nothing but the difference between mass of nucleons and the mass of nucleus। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल मास होता है और जो न्यूक्लियस का मास होता है वो सेम नहीं होता, जबकि न्यूक्लियस का मास शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स ही होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है तभी वो न्यूक्लियस बनता है बेसिकली। सो जो वो एनर्जी डिफरेंस होता है, जो वो मास डिफरेंस होता है, उसे मैं बोलता हूँ मास डिफेक्ट, एंड दैट मास डिफेक्ट ओनली गिव्स मी द एनर्जी फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। सो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट मैंने एनर्जी निकाल ली, और मेरे को पता है E इज इक्वल टू delta m c square, where delta m is the mass defect, delta m c square. So यहाँ से मैं delta m निकाल लूंगा, it would be E upon c square. E is 36 into 10 power 11 divided by c square, which is 3 into 10 power 8 square. So from there I'm getting my final answer as 4 into 10 power minus 5 kgs, but they are asking me in grams, so I will divide it by 1000 and multiply it by 1000, so I will get my final answer as 4 into 10 power minus 2 grams. So C part is my right answer. Okay, let's move ahead. Fast neutrons can easily be slowed down by ये तो सिंपल रेडियो एक्टिविटी का सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये तो मतलब बेसिकली नॉलेज बेस्ड है। जो मेरे न्यूट्रॉन्स होते हैं इस ये मैं यूज करता हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर में, मैंने आपको कल बताया भी था, जब भी मेरे को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करनी होती है, तो फॉर डूइंग न्यूक्लियर फिजन आई हैव टू बम्बार्ड द न्यूक्लियस विद माय न्यूट्रॉन्स विद अ न्यूट्रॉन गन। सो वो जो फास्ट न्यूट्रॉन्स आते हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं, या फिर हम लोग ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। So passing them through water would slow down them. So fast neutrons can easily be slowed down by passing them through the water. In nuclear reactors, heavy water is used in the moderator. What is heavy water? Heavy water is D2O, which is the not H2O, it is D2O, which is the isotope of hydrogen. It is called deuterium. This is heavy water, and the normal water we use H2O is only normal water. For heavy water, we use deuterium, which is D2O. So if anytime it is asked to you that which isotope of hydrogen is being used in the nuclear reactor, so it is deuterium. Cool. Moving on to next question. For an element decaying through simultaneous reactions, okay, the half-life for the respective decaying paths is 1400 seconds and 700 seconds. Half-life मुझे दिया हुआ है 1400 seconds, decaying through simultaneous reactions। तो पहली वाली रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो है 1400 seconds, and for second reaction it is 700 seconds। Find the time taken when the number of atoms becomes n naught by 3 in the element sample, where n naught is the initial number of atoms in the sample। ठीक है? सो मेरे को बेसिकली क्या बोला है इस क्वेश्चन में, दे आर सेइंग दैट कोई एलिमेंट है जो साइमल्टेनियस रिएक्शन से डिके हो रहा है, मतलब पहले मान लो यूरेनियम रेडियम में कन्वर्ट हुआ, फिर रेडियम थोरियम में कन्वर्ट हो गया, इस टाइप से। तो मेरे को दोनों ही रिएक्शंस का हाफ लाइफ टाइम पीरियड दिया हुआ है, फर्स्ट रिएक्शन का 1400 सेकंड से एंड सेकंड का 700 सेकंड से।
फिर मुझसे टाइम पूछा है कि अगर इनिशियल नंबर ऑफ मैंने जो आइटम्स लिए हैं, लेट्स से यूनियन के, वो अगर एन नॉट लिए थे, तो वो एन नॉट अपॉन 3 कितने टाइम में हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट। सो इसमें वापस जब भी कोई रेडियो एक्टिविटी का सवाल आता है, मैं एक ही क्वेश्चन लगाऊंगा, माई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर रेडियो एक्टिविटी विच इज एन इज इक्वल टू एन नॉट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनटू ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको टी तो पता नहीं है, क्योंकि लैम्डा तो आपको पता नहीं है, क्योंकि लैम्डा तो होता है ln 2 अपॉन टी। लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो आप कैसे यूज करोगे? सबसे पहले बेसिक इक्वेशन तो आपकी यही है, एन नॉट बाई थ्री इज एन नॉट बाई थ्री इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर टी बाई टी, वेयर दिस वुड रिप्रेजेंट द हाफ लाइफ टाइम पीरियड। मतलब ये ऐसे होगा, uh, जो मेरा लैम्डा होता है, दैट इज नथिंग बट ln 2 अपॉन टी हाफ। But you don't know what is your t half, so how would you do this thing? So basically, if you will take log both sides, you will get ln of n is n naught by 3, so n naught by 3 upon n naught, it will be ln of 1 by 3 is equal to minus lambda t। ठीक है, और इसको अब मैं ऐसे लिखता हूँ कि ln 3 is equal to lambda t। ठीक है, अब मैं लैम्डा कैसे निकालूंगा, दैट्स माय क्वेश्चन। सो मेरे को पता है कि जो मेरा लैम्डा होता है, दैट इज ln 2 अपॉन टी हाफ, और मेरे को दो रिएक्शंस का टी हाफ दिया हुआ है, 1400 सेकेंड्स एंड 700 सेकेंड्स। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालता हूँ, जैसे कि यहाँ पे किया है, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब देन समथिंग इज मिसिंग हियर, बिकॉज यू कांट डू इट लाइक दिस। Let's leave this question. There is some error because they are not considering the 7 seconds. So there must be some mistake. First, let's move on to next question. Leave it. The half-life of a radioactive nucleus is 5 years. मेरे को half-life दिया हुआ है 5 years. T half is given to me as 5 years. And then they're saying the fraction of the original sample that would decay in 15 years is how much. So ये वापस वैसे ही होगा, मैं n naught is equal to n naught e की power minus lambda t लगा दिया मैंने, and lambda is nothing but ln 2 upon t half. So same thing I applied, t half is given to me as 15 years, 5 years, sorry. So ln 2 upon 5, that is equal to something around 0.136 year inverse, and n is equal to n naught e power minus lambda t. So n naught e power minus lambda t, lambda is 0.1386 into time period 15 years. So this is my final answer, a quite simple question. ठीक है, so oh, one second. Okay, they are asking about the fraction. They are not asking about the nuclei. They are asking about the fraction of the original sample that would decay. ना decay होगा, मुझसे वो पूछा बेसिकली। फ्रैक्शन निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, मैं डिवाइड कर दूंगा इनिशियल नंबर ऑफ इनिशियल को, अगर मैं फाइनल इतने बच रहे हैं, तो मेरे डीके कितने हो गए, डीके हो गए 1 माइनस फाइनल जितने भी है, सो दिस मच इज डीकेड। सो बस मैंने फ्रैक्शन निकालने के लिए जो इनिशियल था उसको फाइनल से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, वी नो दैट हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस इज 5 years, व्हिच मींस दैट फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर वुड बी वन हाफ इज टू वन हाफ, मतलब हाफ ईयर्स के बाद, मतलब एक हाफ लाइफ के बाद जो मेरे न्यूक्लियर है वो आधे हो जाएंगे। तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को बोला कितना है, मेरे को बोला है 15 ईयर्स, और 15 ईयर्स नथिंग बट 5 into 3, सो बेसिकली देयर आर 3 हाफ लाइफ। सो 3 हाफ लाइफ के बाद जो मेरे न्यूक्लियर है वो 1/8 हो जाएंगे, तो n नॉट बाई 8 हो गए। ठीक है, so fraction decayed is 1 minus n naught by 8. So 7 by 8 is the fraction of original sample that would decay in the given time period. ठीक है, चाहे मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, चाहे मैंने जो यहाँ से निकाला है, यहाँ इसको डिवाइड कर सकता हूँ n naught से,
यहाँ से भी मेरे को सेम आंसर मिलेगा। बाकी दिस इज द सिमिलर सिंपलर वे, क्योंकि अगर मैंने वो चीज ऑब्जर्व कर लिया कि वो हाफ लाइफ का 3 टाइम्स है, सो आई कैन इजिली डू इट, बिकॉज यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, बट यहाँ से आपको लॉग वगैरह लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है ना भी सॉल्व करना पड़े, बट दिस इज अ बेटर वे, क्योंकि इसमें मेरे को दिख रहा है कि जो मेरा 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स इज नथिंग बट 5 into 3। सो 5 into 3 मीन्स implies 3 half lives, 3 half lives, so it would be n naught upon half upon half upon half. So it would be n naught n naught upon 8. This much is uh, the nuclei after 15 years. So how much is decayed? It would be 1 minus n naught by 8. If initially I took it to be equal to 1. So 7 n naught by 8 is the remaining. So the fraction of original sample that would decay in 15 years is 7 by 8. Okay? So this is my answer to this problem. Okay, so coming on to one question for assertion and reasoning. हाँ, तो इसमें क्या बोला, they are saying one is labeled as assertion A and other is reasoning. So assertion is given to me as the binding energy per nucleon is practically independent of the atomic number for nuclei 30 to 70. अच्छा, मेरे को बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एटॉमिक नंबर से 30 to 170 न्यूक्लियर के लिए, और रीजन है न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड। सो इसमें ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मेरा न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट ओनली एक्ट्स इन शॉर्ट रेंज, जो शॉर्ट रेंज वाले न्यूक्लिया होते हैं उसमें एक्ट करता है अप्रॉक्स 10⁻⁻15 पिकोमीटर की रेंज में। सो मीटर की रेंज में, सो बेसिकली 30 to 170 वाले जो न्यूक्लिया होते हैं मास नंबर के, उनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स की जगह न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करता है। न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट इसलिए करता है क्योंकि वो शॉर्ट रेंज होता है। तो इसलिए जो मेरी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फोर्स पर डिपेंड करती है, विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास नंबर, सो एटॉमिक नंबर, सॉरी। सो ये एस्ट्रेशन सही है और रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वही चीज यहाँ पे लिखा होगा, द स्टेटमेंट अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is true and is known as the semi-empirical mass formula. According to this formula, the binding energy per nucleon for nuclei in the range of 30 to 170 is nearly constant, with a maximum value around mass number 60 for iron. The statement about nuclear force being short range is also true. The strong nuclear force that binds nucleons together is a short range force that acts only over distances of a very few femtometers. Therefore, both assertion and reason are correct, and reason provides a valid explanation for assertion A. ठीक है, अभी एक बार इस क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, इस वाले पे जो कुछ गलती थी। Ignore the solution. Let us do it with a different way. So basically इसमें मुझे क्या बोला है, इसमें they are saying कि जो मेरा एक न्यूक्लियाई है, लेट्स से मैं उसको कुछ भी बोल देता हूँ ए, वो दो साइमल्टेनियस रिएक्शन के जरिए ब्रेक डाउन कर रहा है। एक का हाफ लाइफ है 1400 और एक का है 700। सो इसका मैं लैम्डा निकाल लूंगा। इसका लैम्डा कितना हो जाएगा, इट्स लैम्डा वुड बी ln 2 अपॉन हाफ लाइफ विच इज 1400 सेकेंड्स, ln 2 अपॉन 1400 seconds. This is my lambda. So this is per second होगा, obvious सी बात है, क्योंकि अपॉन टाइम होता है। और सिमिलरली इसका लैम्डा कितना होगा, इसका हो जाएगा ln 2 अपॉन 700 seconds, ln 2 upon 700. This would be my half life for this nucleus, this reaction. सो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा लैम्डा होता है इससे केसेस में जब साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है, पैरेलल रिएक्शन हो रही है, बेसिकली सीरीज में नहीं हो रही, तो इस केस में जो मेरा नेट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो ऐड हो जाता है। वाई ऐड हो जाता है, क्योंकि मेरा न्यूक्लियस इसमें ब्रेक कर रहा है, इसमें ब्रेक कर रहा है। तो बेसिकली लैम्डा इज नथिंग बट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कि वो किस स्पीड से, किस दर से ब्रेक डाउन कर रहा है। तो वो दोनों दर में ऐड कर दूंगा ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको ऐसे समझो कि इफ यू हैव सम चॉकलेट्स
और आप उसको दो बच्चों को दे रहे हो, लेट्स यू हैव 10 चॉकलेट्स एंड यू आर गिविंग 2 चॉकलेट्स पर सेकेंड टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। सो बेसिकली कितने समय में आपकी चॉकलेट खत्म हो जाएगी अगर आप सबको दोनों को दो दो दे रहे हो? सो ऑब्वियस सी बात, आप दो दो ऐड करोगे ना कि यू आर गिविंग 4 चॉकलेट्स पर सेकेंड, सो 2.5 सेकंड में आपकी चॉकलेट खत्म हो जाएगी बेसिकली। आप दोनों को ऐड कर दोगे, उसको ऐसे समझो कि 1 सेकंड में आप कितना डिसइंटीग्रेट कर रहे हो। यू आर गिविंग 4 चॉकलेट्स पर सेकंड, सो यू नो दैट इन 2.5 सेकंड्स योर चॉकलेट शुड बी फिनिश्ड। सिमिलर वे में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो न्यूक्लियस है वो एक जगह डिसइंटीग्रेट हो रहा है इस रेट से, और एक जगह डिसइंटीग्रेट हो रहा है इस रेट से पर सेकंड। सो मैं दोनों रेट को ऐड कर दूंगा ताकि मुझे नेट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल जाए। तो मेरा माय जो नेट लैम्डा हो जाएगा वो हो जाएगा 1400 एलसीएम 2 ln 2 + ln 2, दैट वुड बी 3 ln 2। तो यहाँ से आया मेरा 1400 वाला कंपोनेंट। सो ये मेरा नेट लैम्डा हो गया। सो मेरा n0/3 इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया विच इज n0 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा नेट। लिख दूं मैं यहाँ पे लैम्डा नेट, इट वुड बी लैम्डा नेट अपॉन टाइम पीरियड जो मुझे निकालना है। सो इट वुड बी ln ऑफ 3 इक्वल्स लैम्डा नेट divided by net time period. So time period would be ln 3, not ln 3 actually. So my time period would be lambda net upon ln 3, lambda net upon ln 3. Ln is nothing but log base e if you are confused with ln. So lambda I know. So let me put it. So it would be 3 ln 2 divided by 1400 into ln 3. ठीक है? So I'm going to solve it, and after solving I will get my final answer for time period. ठीक है? तो बेसिक क्वेश्चन का यही था कि आपको नेट लैम्डा निकालना है। नेट लैम्डा निकालने के लिए आपने एक का लैम्डा निकाला, दूसरे का लैम्डा निकाला, फिर आपने दोनों लैम्डा ऐड कर दिए। ठीक है? सो यू गॉट योर नेट लैम्डा एंड देन दे आर सेइंग दैट फाइंड द टाइम टेकन व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स बिकम n0/3. सो यू अप्लाई द सेम इक्वेशन, n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा टी होगा यार, सॉरी लैम्डा बाई टी नहीं होगा, सॉरी अगेन फॉर द मिस्टेक। ई पावर माइनस लैम्डा टी होता है, लैम्डा बाई टी नहीं होता। So let me write it finally. ln 3 is equal to, यहाँ से ln 3 आएगा is equal to lambda net into net time. ln 3 is equal to lambda net into net time. So my net time would be ln 3 upon lambda net, and lambda net I have calculated as 3 ln 2 into 1400. So this is my final answer. You can calculate the values using calculator. So 1400 by 3 into ln 3 by ln 2. This is my final answer to this question. ठीक है? सो बस हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको नेट साइमल्टेनियस रिएक्शंस दी हुई है तो यू हैव टू ऐड बोथ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस disintegration constant respectively, so that you can get your net lambda, and that net lambda you will use in the master equation of radioactivity, which is n is equal to n0 e power minus lambda t, where lambda would be lambda net. So now then you can calculate your respective time period. Cool. Okay, moving on to next question. The mass of proton, neutron, and helium nucleus are respectively this, this,
एंड दिस, मेरे को तीनों का मास दिया हुआ है, एंड देन दे आर आस्किंग मी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो ये तो सिंपल है, मेरे को पता है कि जो मेरा न्यूक्लियस होता है, बाइंड हीलियम न्यूक्लियस होता है, that is 2He4, implies there are two protons and two neutrons. So my मास डिफेक्ट ये नहीं, मेरे को मास डिफेक्ट नहीं दिया हुआ ना, ठीक है। सो बेसिकली मेरे को बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, तो बाइंडिंग एनर्जी में कैसे निकालूंगा? बाइंडिंग एनर्जी में वैसे निकालूंगा, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आई विल अप्लाई दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम देयर आई विल गेट माई नेट बाइंडिंग एनर्जी। उसके लिए मेरे को डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। सो हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एम? 2 into mass of proton plus 2 into mass of neutron, 2 into mass of proton plus 2 into mass of neutron, because there are two protons and two neutrons. For you know that mass number minus atomic number is number of neutrons. So 2 into mass of protons plus 2 into mass of neutrons minus mass of helium nucleus. From there, you will get your final answer. Your answer is 0.0305 atomic mass unit, which is U. So this is your delta M, and you need to calculate binding energy. तो ये वाला 931.5 वाला टर्म हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको जो डेल्टा एम दिया हुआ है, मास डिफेक्ट दिया हुआ है, whenever mass defect is given you in AMU, then at that time you will use for that time you will use 931.5 as your C square value. Why? Because it is given to you in U. So when you will multiply it by 931.5, you will get your final answer in million electron volt. So इसको ध्यान रखना कि whenever जब भी आपको डेल्टा एम की वैल्यू U में दी हो, मतलब AMU में या फिर एटॉमिक मास यूनिट में दी हो, whenever delta m is given to you U, then delta E would be 931.5। इस टर्म को ध्यान रखना ताकि आपको फिर वहां पे आप सी स्क्वायर करोगे, देन यू विल चेंज इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे तो सिंपली इसको याद रखना, 931.5 इनटू डेल्टा एम जो भी आपने कैलकुलेट किया है इन एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ से जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दैट वुड बी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यही चीज मैंने यहाँ पे करी। मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ था, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ था, एंड आई वाज गिवन द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। फॉर दैट मैंने 2 into मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन किया माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। फ्रॉम देयर आई गॉट द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट, एंड देन टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी आई मल्टीप्लाइड इट बाय 931.5 term. From there the answer which I got is in million electron volt, and that is the binding energy of my helium nucleus. Cool. तो यहाँ पे लेट्स एंड दिस सेक्शन। आई होप जो मैंने आज बताया वो समझ में आया होगा। बस वही, मैंने रेडियो एक्टिविटी और बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किया, मास डिफेक्ट का एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं देन यू कैन इजिली गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। ठीक है। सो विद द होप दैट यू अंडरस्टूड द लेक्चर, आई एम एंडिंग दिस। थैंक यू।